Sports Week was also celebrated in January. Students from all classes participated in different games organized by their teachers. Students keenly took part in games and enjoyed a lot. Dear audience, recreational and educational trips are arranged every year in St. Paul's School. Students very anxiously wait for the time when they would have their trips. Recreational trips to different places at Islamabad, both for girls and boys, were separately arranged in December. Students gained knowledge about places and enjoyed their trip very much. Ladies and gentlemen, a remarkable and unforgettable achievement that St. Paul gained this year was opening of a new campus for senior boys in a newly built outsized building at War Model Town. This was another milestone in the history of St. Paul. St. Paul now has 4 campuses, 2 for junior and senior girls and 2 for junior and senior boys. Another event that takes place at St. Paul every year is the annual inspection of the school. An internal annual inspection was conducted in September 2015. Students of both the girls as well as boys' school very nicely decorated their classes with charts and models. Senior teachers from girls' school conducted inspection of boys' school and teachers of boys' school conducted inspection of girls' school. Classroom decoration, students' appearance, their work on notebooks are seen and they are asked questions about different subjects. This helps in creating environment of competition among the students. Dear audience, a new trend that has been set this year, Ms. Komal Hayat, Vice Principal Girls Campus, launched awareness campaigns at various occasions among staff and students about different diseases like cancer, dengue, diabetes and arthritis. To give hope and inspiration to all those battling these diseases, speeches were delivered by students to show ideas about research, prevention and treatment. Though all national and religious days are celebrated in all campuses with zeal and fervor, students give speeches and share information on every occasion. Pakistan Day, the 14th of August, is the most important of all and receives attention of all staff and students. A gracious function was organized this year at War Model Town campus. Mr. Shahid Imran Mard, Assistant Commissioner Texla, witnessed this program as chief guest. In a program organized by the Tehsil Union of Journalists Texla, award for excellence in education was awarded to Mr. and Mrs. Shafkat Hayat. In recognition of their services for education, and students of St. Paul were rewarded with cash prizes. Dear audience, the last but not the least, the event which we are celebrating today, yes, the grand annual function. Last year, this program could not take place due to the depressing incident of Army Public School at Peshawar. Principals, staff, and students of St. Paul, along with the nation, were in the condition of grief and could not celebrate any event that may impair the sanctity of the martyrs of APS. However, the annual prize distribution ceremony was held separately in all campuses. Students who won academic positions and winners of other events were awarded with trophies and certificates. I would say that the whole year at St. Paul was full of curricular and co-curricular events which were very well organized, both on the part of administration and teachers. And at last I would pray for principals and all the staff that God Almighty may keep showering His blessing upon them so they may continue serving the nation with more passion and strength. Thank you. इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी मौजू पर बहस हो रही है तो वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है और बिला तफरीक मजहब, मसलक, रंगो नस्ल, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से हर कोई मुतासिर हो रहा है। आर्मी पब्लिक स्कूल के वो नौनिहाल जो भी कलियों की मानिंद थे वो फूल बनने से पहले ही हजार रसीदा हो गए। ये सानहा तमाम कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अभी इस सानहे को बुला भी ना पाए थे कि वो कलियां जो गुलाब बनकर बाजहान यूनिवर्सिटी में खुशबू बिखेर रही थी इन दहशतगर्दों की सफाकी का निशाना बन गई। जब अश्क आंखों से बहते हैं, दुखिया दिल रोते रहते हैं, इंसान तमाम दुख सहते हैं, क्या दुनिया इसी को कहते हैं जहाँ जलते चमकते सूरज पर दुख दर्द का ही एक खाला है।
चांद से चेहरों का अब भी जालिम महबूब से बाला है। क्या दुनिया इसी को कहते हैं, क्या दुनिया इसी को कहते हैं। अब हमने नौजवानों में वो जज्बा हुर्रियत पैदा करना है जो बुए गुल बनकर फिजाओं में फैल जाएगा, जो मैदानों का रुख करेगा, बर्फ हो तो चोटियों में चमकेगा, मैदानों में उतरेगा तो सीले रवां, समंदर में उतरे तो बहरे में इकराम बन जाएगा। मुफलिसी को तोंगर करे, गदा को शाह करे, बेनूर को साहबे नूर करे। जज्बा इल्म हो तो बुअल सीना, फिक्र हो तो रूमी, फलसफा हो तो गजाली, इश्क हो तो अवैस करनी, लियाकत हो तो जिना, सियासत हो तो बिन हिताब। जज्बा दिल में हो तो तमानियत, इंसान में हो तो इंसानियत, और जज्बा कदीर में हो तो इस्लामी बम कहलाता है। जाने किन किन शक्लों में राज है इस बेदर्दी का, रोना रोए हम आखिर किस किस दहशतगर्दी का। अब हमने नौजवान नस्ल में वो जज्बा बेदार करना है जो सुबह रोशन बनकर पाकिस्तान की आइंदा तारीख में उजाला कर दे, पसपा दिनों को हौसला अता कर दे। अब हमारा फर्ज है कि हम वक्त के तेवर जांचे, हवा का रुख पहचाने, तारीख की रूह को समझे, हवा के जमजमों और गटाओं के इशारों को जांचे, और वक्त के तनाजुर में अपने फिक्र और अमल की तमाम सलाहियतें बामकसद जिद्दोजहद के लिए वक्फ कर दे। बामकसद कोशिश सादत है और इस कोशिश में जान देना शहादत है। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत पे चरागा नहीं होगा। क्लास 6 और 7 के बॉयज पाकिस्तान के उन सपूतों के एजाज में तराना पेश करेंगे जो इनकी राह में जाम शहादत नोश फरमाएंगे। ये तराना शकीला नौरीन ने तैयार करवाया है।
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब हमारी नई नस्ल ने दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाने का अज़्म कर रखा है कि वो अपने दुश्मनों को दहशतगर्दी की जंग में ज़रूर शिकस्त खुर्दा करेंगे। हम सब मिलकर इन तमाम बच्चों के लिए दुआ गो हैं कि वो जिस अज़्म को लेकर आगे बढ़े हैं, खुदा उनके कदम मजबूत रखे और वो कभी भी अपने अज़्म में नाकाम ना हो और ना ही उनके कदम डगमगाने पाए। Cleanliness is half of faith. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. Wash your face. Wash it every day. Our nursery class is going to convey this message to all of us. Students from nursery class. Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Eat your food, eat it every day. Father, mother, brother, sister, eat it every day. Bring your milk, drink it every day. Father, mother, brother, sister, drink it every day. Drink your milk, drink it every day. Father, mother, brother, sister, drink it every day. To pay for a lovely moment is to enjoy it. This is the message of students of class prep. I invite them to come on stage to convey their message. And I doubt. What do you do when you're happy? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know
परवाज में लाए कमी, किसकी हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी। हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आज़ादी मनोसलवा नहीं कि बगैर तकद्दो के हासिल हो जाए। ये ऐसा गोहरे मकसूद है जब भी तलाश में सरगर्दा कौमों को भी मिलता है। आज़ादी हासिल करने के बाद आज़ादी को बरकरार रखना बहुत कठिन और मुश्किल मसला है। वतन की आज़ादी, बका और सलामती की तारीफ हमेशा शोहदा के पाक खून से मुरतब होती है। रुखसारे वतन की सुर्खी में शोहदा का अथर लहू गर्दिश करता रहता है। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। क्लास 3 के स्टूडेंट्स वतन की शान में ताज तहसीन इस मीर नगमे के जरिए पेश करेंगे। ये टैबलो मिसेस फौजिया, मिसेस नायला और मिस सदफ ने तैयार कराया है। अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन में अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन वतन